हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल KW ट्रेड टॉक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक जो कि सब्सिडरी है ऑफ इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टॉक का नाम है SBI कार्ड्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंपनी बिजनेस। कंपनी लगातार फोकस कर रही है ऑन देयर न्यू लॉन्च फॉर द क्रेडिट कार्ड। कंपनी ने अभी रिलायंस रिटेल के साथ पार्टनरशिप करी है फॉर देयर कार्ड लॉन्च विच इज फोकस्ड ऑन द लाइफस्टाइल। इसके अलावा कंपनी ने और भी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं जैसे कैशबैक SBI कार्ड्स, Aditya Birla SBI card in partnership with the Aditya Birla Finance Limited, right? And other credit cards like PSB, SBI partnered with the Punjab and Sindh Bank for the premium segment. So company focusing on launching their new credit cards. Let's discuss the company financials. Company एक mid cap है with the market cap of 74,000 crores. Company का current price है 772 which is well below from their last high which is 817. ROC के numbers है 12.5 and ROE के numbers है 22.0 which is very good number. Over the last 5 years stock का PE is trading well below their median PE which is 45.4. यहाँ पे काफी अच्छा scope है for their PE expansion. Let's jump on to the quarter on quarter profits. On quarter on quarter basis पे stock काफी अच्छा perform कर रहा है. In June 2023 the profit was 593 and now in the last quarter the profit is 594 crores and while in March 2023 the profit was 596 crores. Now in the last March quarter the profit was 662 crores. And if you see the journey of their sales, right, it started from the 1000 in March 2013 and still from since then it's increasing so good, and current 2024 sales are 16,000 crores. And in the likewise the company profit in March 2013 was 136 crores and now the company is posting a highest ever profits which is approx 2409 crores, right? और पैरेलली इसका EPS भी उसी अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन देयर प्रॉफिट। और यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। फॉर द लास्ट 5 years द कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इज 23 एंड ओवर द लास्ट 3 years द कंपाउंडेड ग्रोथ नंबर इज 35%। ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट काफी अच्छी लग रही है एंड एट प्रेजेंट कंपनी के पास 2700 करोड़ के आसपास का कैश अवेलेबल भी है फॉर देयर फर्दर एक्सपेंशंस एनी एक्सपेंशंस इन देयर बिजनेस दे वांट टू प्लान। लेट्स सी द इन्वेस्टर सेक्शंस। प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट इंटैक्ट है सिंस मार्च 2020 which is 68.62. DIs वालों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है from 3.79 to 16.54 and retail having only 6%. So overall 94% is with the strong hand which is good sign. Company was listed in the month of March 2020 in COVID period and if we see the stock price is still available near to this IPO price. The current price is 771 and the IPO price was 758 और काफी टाइम से स्टॉक इस रेंज में सपोर्ट ले रहा है। इसके साथ स्टॉक ने काफी अच्छा फॉलिंग वेज पैटर्न भी फॉर्म किया है और इस रेंज में आकर अभी स्टॉक ने भी ब्रेकआउट भी दिया है विद द ह्यूज वॉल्यूम्स। यू कैन सी इट हियर, राइट? दीज आर द ह्यूज वॉल्यूम्स एंड दिस इज द ब्रेकआउट द स्टॉक हैज गिवन एट द मोमेंट। स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा से अगेन इट्स रीटेस्टिंग द लास्ट सपोर्ट व्हिच इज हियर एंड दिस इज द सेम रेजिस्टेंस लाइन नाउ एक्टिंग एज एन सपोर्ट लाइन फॉर द करंट प्राइस। लेट्स सी द चार्ट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है, बार बार इसी रेंज में आके स्टॉक काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है और वी कैन सी ऑल्सो लाइक द स्टॉक ने यहाँ पर एक डबल बॉटम भी फॉर्म किया है आफ्टर द फॉलिंग वेज पैटर्न। दिस इज द फर्स्ट बॉटम एंड दैट्स द सेकंड बॉटम नाउ। इसके अलावा वी कैन थिंक ऑफ लाइक द स्टॉक कैन परफॉर्म ए राउंडिंग बॉटम लाइक दिस डाउन द लाइन और यदि स्टॉक करंट प्राइस से यदि लास्ट हाई तक जाएगा विच इज 1162 इट वुड बी अ पोटेंशियल गेन ऑफ अप्रॉक्सीमेट मोर देन 50% एंड देयर इज अ अपकमिंग फेस्टिव सीजन, right? There would be a chances, right? The shopping and other stuff will be increasing on this credit cards section, so it could be a good sign for this company profits. So you can keep this stock as under watch, but keep a note, this is just an observation for the education purpose, not a recommendations to buy or sell. I hope ये observation आपको अच्छी लगी होगी. Please like and subscribe and do comment. फिर मिलेंगे next video में. Till then, keep watching, keep supporting. Thank you.